Student, welcome to the study point coaching center. Today's topic is dipole and field. आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको कॉन्सेप्ट लेंगे और ड्यू टू डाइपोल between two conditions, that is axial position and equatorial position. Belonging to this position, we will study the electric field. Okay, let's get started. First, we will try to understand what is an electric dipole. Electric dipole होता क्या है? Actually, an electric dipole is a pair of equal and opposite charges. That is plus q and minus q separated by a distance a. Here we see that there are a system of two charges. One is plus q and another is minus q charge. The separation between these charges is a. This system is to be known as the system of the charges is known as dipole. Here we also come to know that another quantity that is known as electric dipole moment, है ना? ये बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं. The dipole moment is a physical quantity that measures the strength and direction of an electric dipole. Dipole क्या होता है? क्या होता है? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है द स्ट्रेंथ ऑफ एंड डायरेक्शन. इसको दो चीजों को, एक को स्ट्रेंथ को और दूसरा डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. दो कॉन्सेप्ट को कवर करता है. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, that is plus q and minus q separated by a distance. Hence the dipole moment is given by small letter p equal to q multiplied by 2a. Means क्या है? इनके बीच में जो सेपरेशन है चार्ज multiplied by separation between them. Okay. q is the magnitude of each charge. Since dipole में जो रहता है, जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं बट अपोजिट काइंड. एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a. ये मैथमेटिकली हमने इसको अज्यूम करके रखा है, यानी कि इट इज अज्यूम सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम इजी. ओके, सो कीप रिमेंबर दैट द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इन डाइपोल इज 2a. somewhere it is also written as 2a. So don't be panic if there is 2n. Okay. Direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge. Dipole moment जो होता है ना, उसके डायरेक्शन जो होता है किस तरफ होता है? From negative to negative. See here, from negative to positive. ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. ओके, एंड द एसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ the pair of charges, that is the dipole at any point is in space, can be defined by Coulomb's law. इसके जरिए से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, Coulomb's law and the superposition. दो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम क्या काम करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल, दिस डाइपोल के जरिए से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें टू फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, दैट इज कूलम्ब्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बिकॉज है ना, द डाइपोल इज a concept is related to the concept of system of charges. Means there are 2 point charges present here.
Now there are two cases possible, that is when the point is on the dipole axis. यानी क्या है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट कहां पर होगा, द लाइन ज्वाइनिंग, एट द लाइन ज्वाइनिंग अप टू दीज चार्जेस, इन चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है इन्हीं के ऊपर कहीं पर भी होगा. लेट्स से देयर इज ए पी पॉइंट प्रेजेंट एट हियर एंड व्हेन इट इज इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल. ये कहां पर होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर. लाइक जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो आपका सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इट एग्जिस्ट एट द इक्वेटोरियल प्लेन. कैसे, लेट्स से इसको हम समझते हैं. If we draw a perpendicular plane along the line joining of this dipole, the combination may be said equatorial plane, and the point exists at that point will be known as the point at equatorial plane. Alright. Now we will back again. And first we will calculate the electric field for the points on axis, that is axial position. This for the point that is P, such that P is here present. This point P, the position of this point is to be known as axial position, or for the points on the axis. Let a point P be at the distance of R. Point P जो है क्या है, आपके R डिस्टेंस बना रहा है. इसके साथ में from the center, it is, let's say it is center O of these two point charges. यहाँ से इसकी कितनी डिस्टेंस है, that is R. And from the center of the dipole outside the charge plus Q, और कहां पर ये पॉइंट स्थित है, इट इज आउटसाइड फ्रॉम द प्लस चार्ज क्यू से आउटसाइड पर रखा, उसके सामने एज वन इन द फिगर. नाउ सम रीडिंग्स फर्स्ट वी विल कैलकुलेट हियर. नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम प्लस Q. P की क्या पोजीशन होगी आपके प्लस Q चार्ज से, इट विल बी R minus 2A, sorry, not 2A, R minus A, because from center each charge is situated at A distance. ये आपके पास होगा, O से इनकी डिस्टेंस कितनी है, it is A, and also minus Q, the distance from the center to minus Q is also A. So that the distance of P from Q is plus Q is R minus A, and the distance of P from minus Q, here minus Q, it is R plus A. Keep it in mind. Okay. Now electric field due to minus Q charge. Electric field due to minus Q charge, that is E minus Q, will be Q upon 4 pi epsilon naught R plus A square. Since electric field is a vector quantity, so we will also include here P cap, that is dipole moment, to make it vector quantity. Now electric field due to plus Q charge, that is Q upon 4 pi, that is Q upon 4 pi epsilon naught R minus A square, P cap. Okay. The total field at P के ऊपर कितने टोटल फील्ड हो जाएगी, A इक्वल टू E प्लस Q एंड E माइनस Q. मतलब प्लस Q के जरिए से जो यहाँ पर फील्ड आ रही होगी और माइनस Q के जरिए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, दिस वन इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड दिस field is minus Q is for the minus Q charge. Hence दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो we will get
If we combine these two electric fields, we will get Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus r whole square minus 1 upon r plus a of whole square with the unit vector p, that is dipole moment. Now once again, if we will calculate here these quantities, we will first cross multiply this way, and this way. We get Q upon 4 pi epsilon naught. Finally, final answer that will be 4ar upon r square minus a square of whole square p cap. Since r is greater than a, therefore the value of a square is approximately 0. Hence, this a will cancel out, and finally we get r up power 2 here, r up power 2 here, that is r up power 4, and here 4ar. This r will cancel out, and here power will left, that is r up power 3, and finally we get that q upon 4 pi epsilon naught 4a upon r cube p cap. Finally, you कह सकते हैं हम as per magnitude, we know that p equal to q into 2a, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q into 2a होता है. So that इस पोर्शन से हम क्या काम करेंगे, 2a बाहर लेंगे और q के साथ ले लेंगे. यहाँ से क्या ले लेंगे हम, q into 2a, और बचेगा हमारे पास साथ में 2 बचा रहता है. This reading will become as p, and finally these 2 and p will become 2. As e equal to 1 upon 4 pi epsilon naught r cube p cap, where p cap is only unit vector. If we want to note it as a magnitude, है ना, we can remove p cap here. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, p cap की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं. It is the unit vector. Then our magnitude will be e equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube, where p is known as dipole moment vector. Okay. Now this formula is for the point that is present on the axis of this dipole, that is plus q and minus. Okay, thank you.